My lovely students, welcome to Mathological. This is the 38th session of our CAT DILR100 series. Start करते हैं एक और beautiful session with another beautiful DILR set. And if you have not already subscribed to the channel, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना, and you also can join Telegram and WhatsApp channel. Link you can check out from the description as well. So this is the set for today, detailed set followed by 5 questions. So बढ़िया set है. Take your time. This will take some time, so definitely थोड़ा time लगेगा. And if you've not practiced a lot of sets, then give this set at least 25-30 minutes to solve this set. Understand the nuances, conditions, and then try to solve it. Okay. Start करते हैं, and I hope कि तुमने अपने end पे try किया होगा to solve this set. So Uvin Sports conducts a simulation in which participants trade contracts based on whether specified events will occur. Each contract has a face value of ₹100 and is of either yes or no type. So there are two types of contracts, yes type contract and no type contract. A yes type contract pays ₹100 at the settlement if the specified event occurs and is ₹0 otherwise. A no type contract pays ₹100 at settlement if the specified event does not occur and ₹0 otherwise. Okay? So for example, if there is an event X and if that event occurred and you were in a yes contract, then you will be getting the price, getting the settlement. If you were in the no contract, then you will not be getting any amount whatsoever. The buyer pays the contract price to the seller when the contract is entered into. If the contract pays ₹100 at settlement, the seller pays the corresponding amount to the buyer. There are no other charges. For each event, the yes price is quoted at 9 a.m. each day and changes by a fixed amount every day. The no price on any day is ₹100 minus yes price. The price quoted on the day a contract is entered is the contract price and remains fixed until settlement. All contracts are settled at 6 p.m. on day 100. And then we've been given for 5 events E1, E2, E3, E4 and E5, yes price on day 1 in rupees 60, 45, 70, 35 and 55, and daily changes in yes price, which is rupees 5, rupees 4, increase with a plus sign and decrease with a minus sign, and then plus 7, plus 3. For example, if an event's yes price is rupees 60 on day 1, which is for event 1, E1, so rupees 60 on day 1, so on day 2, it will be increasing by rupees 5 per day. This is for E1. Okay, so for E1, and if it is increasing by rupees 5 per day, so yes price on day 2 will be 60 plus 5, 65 rupees, and on day 3 will be 70. Basically क्या है, prices हमारे AP में होंगे for every day, और हमारे AP का common difference will be this value, and first value price on day 1 that is equal to 60. और ये yes prices and no prices क्या होंगे, 100 minus yes price. ठीक है, so for example, if we discuss about E2, for E2, and let us say on day 4, so what will be yes price on day 4 for E2? On day 1 that is 45 and it is increasing by 4 rupees on every day. Yes price on day 4 will be 45 plus 3 more days, so plus 4 into 3, so 45 plus 12 that is equal to 57 rupees. And no price, this will be 100 minus yes price, so that will be 43 rupees. Okay, क्या है तो बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. 5 participants Aman, Binni, Charu, Dinesh and Isha enter into the following contracts. अब contracts हमें table में given है. So buyer in the first column, seller in the second column, and which event they entered the contract into. So that is given in third column, and day of entry, that is 2, 3, 4, 5, 6, 7, whatever the value is, and number of contracts that have been entered into, and type of contract, whether that is a yes contract or a no contract. Okay. So first condition, exactly 3 of the 5 events occurred. So 5 events हमारी कौन कौन सी है, E1, E2, E3, E4, E5. And exactly 3 events occurred out of these 5. Exactly 1 of E1 and E2 occurred. So 1 event out of these 2 has occurred and 2 events out of these 3. E3 occurred if and only if E4 did not occur. So if E3 occurs, then E4 will not occur. That is for sure. Otherwise, E3 will not occur. Otherwise, E3 will not occur. And since there are exactly 2 events out of E3, E4, E5 which are definitely going to occur, so if E3 is not occurring, so that must imply that E4 has to occur. Okay, जब E3 occur करेगा, कब करेगा? When E4 is not occurring. But so if E4 is not occurring, E3 must occur and E5 must also occur, because there must be 2 events which are occurring out of these 3.
बिकॉज E1 E2 में से एक ही करेगा, ठीक है. सो इफ E3 इज नॉट अकरिंग, इन दैट केस बोथ E4 and E5 मस्ट अकर. So one thing is certain, that E5 is definitely occurring in either case, and if E5 is occurring, then E1 cannot occur. So E1 is not occurring for sure, and hence E2 must be occurring for sure. So E2 and E5 are definitely going to occur, but we are not sure about E3 and E4. Which of the following is going to occur? So दो cases बन रहे हैं, either E2, E3 and E5 are going to occur. Second case, either E2, E4 and E5 is going to occur. तो E2, E3, E5 या फिर E2, E4, E5, ये हमारे दो सिनारियोज बन रहे हैं यहाँ पे पॉसिबल केसेस. क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन हमारे क्या करें? फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मस्ट हैव अकर्ड. ठीक है. सेकंड वन, इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर चारू वाज रुपीज एक्स, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एक्स. थर्ड, इफ द एक्सम एब्सोल्यूट वैल्यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और फिर फोर्थ है इफ कंडीशन के साथ में, और फिफ्थ है एक न्यू पार्टिसिपेंट के बारे में. ठीक है. सो क्वेश्चंस को से पहले कंडीशंस को और बेटर तरीके से समझते हैं. चारूज नेट प्रॉफिट वाज लेस देन ₹5,000. अ पार्टिसिपेंट्स नेट प्रॉफिट इज सम ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच द पार्टिसिपेंट इज ईदर द बायर और द सेलर. ओके. सो जिन इवेंट्स के बारे में वी आर श्योर कि दैट इवेंट्स हैव इधर डेफिनेटली अकर्ड और डेफिनेटली डिड नॉट अकर, तो उनके बारे में टाइप हमें पता है, ये यस कॉन्ट्रैक्ट और नो कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. फॉर एग्जांपल, फॉर इवेंट इवन there are two types of contracts. First contract is a yes contract, and last one is also a even event contract, but there is a no contract. But for E1 we know that this event has not occurred. So outcome क्या है हमारा? Because we know for sure that outcome is no. Outcome is no. And if outcome is favorable, then the buyer will be getting the profit. And if outcome is not favorable, तो profit किसको होगा? Seller को होगा उस केस में. Because question condition clear था. If a yes contract pays ₹100 at settlement if the event occurred and ₹0 otherwise. अब देखो, पेमेंट तो पहले ही बायर हैज ऑलरेडी पेड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टू द सेलर, तो सेलर को तो पैसा मिल ही गया है. सो इफ यस कॉन्ट्रैक्ट इज देयर एंड इवेंट हैज अकर्ड, देन सेलर हैज टू पे ₹100 टू द बायर. सो देयर विल बी अ लॉस टू सेलर, इजंट इट सो? देयर विल बी लॉस टू सेलर फॉर श्योर, क्योंकि ₹100 से कम अमाउंट उसको प्राइस मिला होगा और उसको पे करना पड़ा 100, तो देयर इज अ लॉस टू सेलर एंड बेनिफिट or profit to buyer in a yes contract if the event has occurred. Similarly, if there is a no contract and event has not occurred, there will be a profit to buyer and loss to seller. But in the opposite scenario, when there is a yes contract and the event has not occurred, then seller will be at profit and buyer will be at loss. Similarly, if there is a no contract and event has occurred, यानी कि no का opposite हो गया, event हो गया, so in that case, buyer will be at loss and seller will be at profit. Clear? So outcome देख लिया हमने, yes and no. So yes was our type of contract between Aman and Binny, but the actual outcome of event even is no, because that has not occurred. Similarly, for E2 we are certain that this event has occurred, so outcome is yes. और E2 तो कहीं पे नहीं, E2 का तो एक ही सिनेरियो. E3 E4 को अभी हम फिक्स नहीं कर सकते, but E5 is has definitely occurred. So E5 हमारा कहाँ पे आ रहा है? Between Isha and Aman. So yes, this has occurred. Okay. Then question हमारा कह रहा है चारू's net profit was less than ₹5,000. So चारू कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है? चारू इज इन्वॉल्व बिटवीन this deal, this contract between Bini and Charu, where Charu is the seller. Charu is seller, and in this case, this was a no type contract, but the outcome is yes. यानी कि event has actually occurred. तो profit किसका होगा? Profit will be to the seller. तो Charu will be gaining from this. Charu will be gaining from this. अभी जो कंडीशन हमें गिवन है, Charu's net profit was less than ₹5,000. ये इंप्लाई क्या कर रहा होगा? यहीं से हमें आइडेंटिफाई होगा कि E3 E4 में से which of the events has occurred. बिकॉज अगर दोनों सिनेरियो बनेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनेंगे और मल्टीपल केसेस में फिर डिफरेंट प्रॉफिट होगा चारू का. बट क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्किंग कि व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ चारू एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हमें डेफिनेट वैल्यू मिलने वाला है. ठीक है, डेफिनेट वैल्यू मिलने वाला है. तो डेफिनेटली अब यहाँ पे चारू कहाँ का इन्वॉल्व है? दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पे चीजें फिक्स्ड है. वी नो कि दैट E2 हैज इवेंट हैज डेफिनेटली अकर्ड. सेकंड केस है हमारा बिटवीन चारू एंड दिनेश, एंड दैट इज फॉर इवेंट E3. So either E3 would have occurred or would not have occurred. And the third scenario is between Aman and Charu, where Charu is again a seller. And that is for event E4. So between these two events, first scenario is that both E3 and E3 occurred and E4 did not occur. Or second scenario is that E3 did not occur, but E4 occurred. Okay. And as far as E3 is concerned, the contract of E3 क्या है? That is yes. Yes contract and Charu is a buyer.
चारू is a buyer. So if E3 event is going to occur, in that case profit किसका होगा? Profit होगा buyer का. So in this case profit will be of Charu. But in the opposite case, if E3 is not occurring, so Charu will be at loss. In the second scenario for E4, similarly for E4, Charu is a seller. और E4 का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दैट इज ऑल्सो यस कॉन्ट्रैक्ट. यस कॉन्ट्रैक्ट में किसका प्रॉफिट होगा? बायर का प्रॉफिट होगा इफ इवेंट हैज अकर्ड, बट सेलर का प्रॉफिट होगा इफ इवेंट हैज नॉट अकर्ड. सो इन केस ऑफ E4 नॉट अकरिंग, so there will be profit to Charu. So Charu will be having profit in both these scenarios when E3 is not occurring and E4 is occurring. But in the otherwise case, if E3 does not occur, so Charu will be at loss. E4 occurred, Charu will be again at loss. ओके, अब हम फर्स्ट केस से अपना चारू का प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है ये देख लेते हैं. सो इन द फर्स्ट सिनेरियो, बिकॉज E2 तो फिक्स्ड है, अब E2 वाले केस में परचेज प्राइस क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बिकॉज चारू इज द सेलर एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड ऑन डे 3 फॉर E2. तो E2 डे 3 का प्राइस क्या होगा? दैट विल बी 45 प्लस 8 53 रुपीज. एंड दिस इज नो कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट. 53 रुपीज प्राइस होता है यस कॉन्ट्रैक्ट का. तो 100 minus 53, 47 rupees will be the contract price, because that is a no contract. 47 rupees is the contract price. And since the actual outcome is yes, तो in that case चारू को कुछ भी पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, 100 रुपीज सेटलमेंट नहीं देना पड़ेगा. सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा चारू का? चारू का प्रॉफिट इन दिस केस विल बी 4700, बिकॉज देयर आर टोटल 100 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड on each contract चारू इज बीइंग पेड 47 rupees each ड्यूरिंग द एंटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और फिर बाद में पे कुछ भी नहीं करना है. सो इन दिस केस प्रॉफिट ऑफ चारू विल बी 4700 रुपीज. और हमें क्लियरली मिल रहा है कि इन दिस सिनेरियो इफ E3 is going to occur and E4 is not going to occur, in that case Charu will be in profit on both the cases, but definitely net profit less than 5000 rupees नहीं हो पाएगा for sure. So this must be the case. This must definitely be the case and this will not be the case. बिकॉज ऑलरेडी चारू का प्रॉफिट 4700 रुपीज का हो चुका है, 300 और प्रॉफिट हो जाएगा तो चारू का प्रॉफिट ओवरशूट कर जाएगा 5000 को. और दोनों केसेस में यहाँ पे व्हेन E3 इज अकरिंग एंड E4 इज नॉट अकरिंग, बिकॉज या तो E3 होगा तो E4 नहीं होगा, E4 होगा तो फिर E3 नहीं होगा. तो डेफिनेटली ये पहला वाला केस हमारा नहीं होगा, सेकंड वाला केस होगा. ठीक है, फिर भी कंफ्यूजन हो तो तुम वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, बट हमें यहाँ पे साइन से सीधे समझ में आ रहा है कि हमारा 4700 से थोड़ा भी शूट करेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली 60 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे एंटर हो रहे हैं. यहाँ पे एंटर हो रहे हैं हमारे सेकंड केस में 80 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हमारा वैल्यू इजिली ओवरशूट कर जाएगा अच्छा खासा. ठीक है, 3-4 हज़ार और एडिशनल इंक्रीज कर जाएगा प्रॉफिट के केस में, और लॉस के केस में उतने से डिप करेगा. तो डेफिनेट सी बात है कि हमारा सेकंड वाला केस होगा. और सेकंड वाला केस होता है फिक्स हो गया कि वी नो कि कौन सा केस हमारा बन रहा है. E2 हो रहा है और E4 हो रहा है और E5 हो रहा है. तो दिस वाला केस इज देयर. E2 इज अकरिंग, E4 इज अकरिंग एंड E5 इज अकरिंग. E2, E4 एंड E5. क्या पार्ट क्लियर है? और इससे हमारा पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है कि E2, E4 एंड E5 ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, प्रॉपर्ली इसका टेबल बना के अब अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. बट क्या है तक बात समझ में आती है? कहीं भी डाउट है यहाँ तक तो एक बार फिर से शांति से सोच के अपने एंड पे देख लो कि क्यों हमने डायरेक्टली कंक्लूड किया कि यही वाला केस हमारा बनेगा, बिकॉज ऑफ गिवन वैल्यू. ठीक है, बिकॉज फर्स्ट वाले केस में दोनों ही केसेस में प्रॉफिट होगा और कितना भी छोटा छोटा प्रॉफिट होगा अच्छा खासा हो जाएगा. बाकी वैल्यूज रख के भी देख सकते हो तो पूरा एनालिसिस भी कर सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ गिवन कंडीशन की 47 रुपीज का ऑलरेडी चारू का प्रॉफिट हो चुका है. तो इस केस में और भी ज्यादा इंक्रीज ही करेगा प्रॉफिट हमारा. ठीक है, अब सारी की सारी वैल्यूज को साथ में प्यार से लिखते हैं और समझते हैं चीजों को. ठीक है, सो अब यहाँ पे तो हौच पौच हो जाएगा बहुत ज्यादा. अगर यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे तो चीजें हौच पौच हो जाएंगी. क्या किया जाए? चलो लिख तो यहीं पे लेते हैं, फिर बाद में एक फ्रेश टेबल बनाएंगे फॉर अमन, बिन्नी, ABCD इन सब के लिए, और वहां पे फिर हम टोटल प्रॉफिट्स अलग से कैलकुलेट कर लेंगे वो एक प्रॉपर टेबल बना के. यहाँ पे हम प्रॉफिट के लिए लिख लेते हैं. ठीक है ठीक है ठीक है, और साथ में लिखते चलते हैं तो फ्रेश टेबल अपनी बना लेते हैं. और ABCD
Okay, and finally we'll be getting profit or loss values here. Okay, so outcomes को पहले note down कर लेते हैं. So no and yes for E3 definitely did not occur. So no is the outcome. For E4, yes, it has occurred. For E4, yes, it has occurred. Okay, so because of first event E1, पहले अब परचेज प्राइस भी साइड साइड लिखे थे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस, डे ऑफ एंट्री क्या है 2 है, एंड फॉर E1 60 रुपीज इज डे 1 प्राइस, डे 2 प्राइस होगा 65 फॉर यस कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इज अ यस कॉन्ट्रैक्ट, तो 65 रुपीज विल बी परचेज प्राइस. फॉर E3 ऑन डे 4 परचेज प्राइस क्या होगा, E3 ऑन डे 4, E3 70 और -6, सो -6, तो डे 4 पे क्या होगा -18, 70 -18, तो यस प्राइस क्या हो जाएगा हमारा डे 4 पे 70 -18, दैट विल बी E3 का ही था ना, हाँ 70 -18, 52 विल बी यस प्राइस, और क्वेश्चन में यस कॉन्ट्रैक्ट ही है. सो E4 ऑन डे 2, E4 on day 2, that is 35 plus 7, 42. So 42 will be our day 2 price for E4, but that is for yes contract. For no contract, that will be 100 minus 42, that is 58 rupees. For E5 on day 5, so E5 on day 5, 55 plus 12, that will be 67 rupees, and that will be for yes contract. And this is a yes contract, so 67 rupees will be the contract price. For E4 on day 6, E4 day 6. So E4 day 6, 35 plus 35, 70 rupees will be for yes contract, and this is a yes contract, so 70 rupees he pay karega. And for E1 on day 7, and E1 day 7 will be 60 plus 30, 90 rupees, but 90 rupees is for a yes contract, but this is not a yes contract. So this is a no contract, 100 minus 90, यानी कि 10 rupees will be the payment for E1 on day 7. तो ये सारा हमारा पेमेंट का सिनेरियो हमें मिल गया. ठीक है, जहां पे हमारा आउटकम सेम है, टाइप एंड आउटकम, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आउटकम, जहां पे दोनों बातें सेम है, तो वहां पे प्रॉफिट किसका होगा, प्रॉफिट बायर का होगा, क्योंकि बायर के फेवर में आउटकम आया है, बायर ने जो टाइप का परचेज किया कॉन्ट्रैक्ट, सेम रिजल्ट आया, तो जहां पे टाइप आउटकम सेम है वहां पे प्रॉफिट किसका होगा, बायर का होगा, और जहां पे टाइप और आउटकम ऑपोजिट है वहां पे प्रॉफिट किसका होगा, सेलर का होगा. ठीक है, क्लियर है बात. तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं. So first case में profit किसका आएगा, since type of contract and outcome both are opposite, so profit will be that of seller. So Binny will be at profit. In the second case, again opposite, so Charu will be at profit. In the third case, again opposite, so Dinesh will be at profit. In the fourth case, again opposite, so Isha will be at profit. In the fifth case, both are same. ठीक है, both are 1 2 3 4, हाँ both are same, तो Isha will be at profit. Sixth case, again Aman will be at profit, and seventh case, buyer, again Dinesh will be at profit. So in the first 4 cases, seller will be at profit, and the last 3 cases, buyer will be at profit. Okay. अब profit होगा कितना? When seller is at profit, तो profit यहाँ पे क्या आएगा? Because seller did not have to pay any amount, any settlement amount to the buyer. So in that case, profit will be equal to contract price multiplied by number of contracts. So 65 into 80. In the first case, क्या आएगा profit? 65 into 80. So that will be equal to 65 into 8, that is 130 or 520. तो 5200 rupees का profit आएगा for seller which is Binny. तो बिन्नी का प्रॉफिट होगा 5200 का, एंड इन दैट केस अमन का लॉस हो जाएगा दैट ऑफ 5200. अब टेबल भी साथ में बनाते चलते हैं. सो इन दिस केस बिटवीन अमन एंड बिन्नी, बिन्नी का प्रॉफिट है 5200 का और अमन का लॉस है 5200. तो फॉर अमन दैट इज अ लॉस ऑफ 5200 अगेंस्ट बिन्नी, ए वर्सेस बी, -5200, एंड बी वर्सेस ए दैट इज +5200. ओके, हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं प्रॉफिट और लॉस. ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बिन्नी एंड चारू, पहले हमने देख लिया था दैट वाज द प्रॉफिट ऑफ 4700 रुपीज फॉर चारू. So between Charu and Binny, profit of 4700 to Charu and loss of 4700 to Binny. So for Charu, that is a profit of 4700, and for Binny, that is a loss of 4700.
और थर्ड वन बिटवीन चारू एंड दिनेश, अगेन ऑपोजिट, तो प्रॉफिट होगा दिनेश का, और प्रॉफिट कितना होगा 52 इंटू 60, तो 56312 3120, तो प्रॉफिट ऑफ 3120 टू दिनेश बिटवीन सी एंड डी। तो सी वर्सेस डी में लॉस ऑफ सी दैट इज 3120 एंड लॉस ऑफ डी ऑफ 3120, सॉरी प्रॉफिट ऑफ डी ऑफ 3120। ओके, फोर्थ केस बिटवीन दिनेश एंड ईशा, अगेन ऑपोजिट है, तो ईशा का प्रॉफिट होगा, दिनेश का लॉस होगा, और अमाउंट क्या होगा 58 इंटू 120, तो 58 इंटू 12 क्या होगा 580 प्लस 116, तो 6960, और प्रॉफिट किसका होगा यहाँ पे ईशा का, तो डी वर्सेज ई 6960 प्रॉफिट टू ईशा एंड लॉस टू दिनेश। नेक्स्ट केस ईशा वर्सेज अमन, बट यहाँ पे आउटकम हमारा एग्जैक्टली वही आ रहा है जो कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यस एंड यस, तो प्रॉफिट विल बी टू द बायर। तो ईशा का प्रॉफिट होगा, अब ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, बिकॉज इन दिस दैट केस कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इज ₹67, बट आफ्टर द रिजल्ट, आफ्टर द आउटकम, फेवरेबल आउटकम, द अमाउंट ₹100 विल बी पेड बैक टू ईशा। तो ₹67 पे किया है ईशा ने अमन को, बट ईशा विल बी गेटिंग बैक ₹100, तो देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ ₹33 टू ईशा। भाई ईशा पेड अमन ₹67, but then Isha got back ₹100. In this case, there is a profit of ₹33 to Isha and loss of ₹33 to Aman. तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, ₹33 का प्रॉफिट आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो 33 इंटू 150, देखिए क्या अमाउंट हो जाएगा हमारा 33 प्लस 16.5 4950, तो ₹4950 का प्रॉफिट हो जाएगा तो ईशा, ईशा वर्सेज अमन, ई वर्सेज ए, 4950 प्रॉफिट टू ईशा and 4950 loss to Aman. Next one, Aman versus Charu. Again, ₹70 Aman has paid, but Aman will be getting back ₹100. तो प्रॉफिट हो जाएगा ₹30 का, 30 इंटू 80 2400 का प्रॉफिट टू अमन। तो ए वर्सेस सी 2400 प्रॉफिट टू अमन, and for C there is a loss of 2400. Now last scenario, profit to Dinesh, and profit will be total ₹90 because Dinesh only paid ₹10, but he'll be getting back ₹100, so a profit of ₹90, so profit of 9,000 in total, 90 into 100, 9,000 to Dinesh. D versus B, profit 9,000 to Dinesh plus 9,000 and then minus 9,000 for Binny. सारी वैल्यूज आ गई, टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं क्यूमुलेटिव वैल्यू। तो सबसे पहले क्योंकि सी के लिए हमें फाइंड आउट करना ही करना है, सो फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू फॉर सी। सो दैट इज -2400 -3120, दैट टोटल इज 3120 5520 with minus, so minus ₹820, so there is a loss of ₹820 to Charu, so answer is ₹820 loss। क्योंकि क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, तो आंसर विल बी 820। ओके, so for Aman, that is +2400 minus 5200 minus 4950, so 5150, 10,150, that is with negative, so minus 10150 और प्लस 2400, तो प्लस 2000 किया तो वैल्यू आ जाएगा -8150, so minus 8000, so minus 7750। ओके, फॉर बिन्नी वैल्यू क्या आएगा हमारा -13700 प्लस 5200, सो -8200, -13700 प्लस 5000, तो -870, हाँ ठीक है, -8200 वैल्यू आ रहा है। और देन फॉर दिनेश 9000 प्लस 3120 12120, 12160 minus 7000, that will be 5160 with a plus sign. And last value for E 7000 plus 4910, so 11910। अब यहाँ पे कोई एडिशनल चार्ज तो था नहीं, तो नेट में प्रॉफिट लॉस हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में अगर चेक करना है कैलकुलेशन में गलती होने का स्कोप है तुम्हारा, तो लास्ट में एक बार चेक कर सकते हो जिन जिन का लॉस हुआ है वो सम जो वैल्यू है हमारा, तो लॉस फॉर ए बी एंड सी, दिस टोटल शुड बी इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, बिकॉज नेट रिजल्ट शुड बी जीरो। क्यों होना चाहिए यहाँ पे जीरो नेट रिजल्ट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एडिशनल चार्ज तो कहीं पे दिया नहीं है, तो जो भी ट्रांजेक्शन हुए ए बी सी डी के बीच में हुए, तो किसी का प्रॉफिट होगा किसी और का लॉस होगा, सेम रिस्पेक्ट में। टोटल वैल्यू फॉर नेगेटिव वैल्यू क्या आ रहा है, लॉस क्या आ रहा है,
तो 7750 प्लस 8200 तो 87 15,950 तो 16,770 एक सेकंड 8715 सो 15,950 ठीक है 16,770 ओके यहाँ कैलकुलेशन हमने ठीक किया है ये कैलकुलेशन एक सेकंड गड़बड़ किया हम लोगों ने 94700 तो ये आया था हमारा 13,700 तो ये 8,500 आएगा 300 और बढ़ेगा ये ठीक है 300 ये वैल्यू और बढ़ेगा हमारा दिस विल बी 17070 बाकी लास्ट में कैलकुलेटर भी एक बार यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं जस्ट इन केस ठीक है -8500 और एग्जाम कंडीशन में देखो इतना लंबा अगर सेट आएगा तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा ठीक है ऐसे सेट को तो नहीं कर सकते बट अभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में ऐसा कोई हैंडी सेट आएगा तो डेफिनेटली हम फिर कर पाएंगे क्योंकि कंडीशन हमें पता होगी समझा होगा हमने ऐसा सेट पहले प्रैक्टिस किया होगा तो चीजें आसान हो जाती हैं अदरवाइज नहीं किया होगा तो डेफिनेटली स्किप करने वाला ही सेट है ठीक है और लास्ट में हमने चेक किया फिर सेम वैल्यू प्लस में भी आ रहा है 11910 प्लस 5160 तो 11516 तो यस 17,070 प्लस में भी वैल्यू आ रहा है यस दिस इज मैच ठीक है तो चीजें मैच कर रही हैं अब क्वेश्चंस करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वही कहता है थर्ड वन विद द मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पार्टिसिपेंट इज रुपीज एम सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम सो कहाँ पे हमारा लॉस मैक्सिमम आ रहा है -8500 बट प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है 11,910 तो मैक्सिमम वैल्यू इज 11,910 एम का मैक्सिमम वैल्यू विल बी 11910 रुपीज Now, fourth question: if the contract in which Binny sold 100 no contracts on E1 had been entered into on day D instead of day 7 with all other contracts and outcomes unchanged, so Binny's total profit would have been rupees minus rupees 6,000 यानी कि लॉस जो होगा वो पहले से डिक्रीज हो जाएगा दैट विल बी रुपीज 6,000 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एट प्रेजेंट क्या लॉस आ रहा है बिन्नी का -8500 बट क्वेश्चन इज सेइंग अंडर न्यू कंडीशंस द लॉस इज -6,000 so basically because of this change in day of trade there is a profit of या लॉस हमारा जो है डिक्रीज हो जा रहा है 2500 से there is addition of 2500 because from 8,500 loss the new loss is 6,000 rupees so there is a basically change of 2,500 rupees और इंक्रीज हो रहा है उसमें ठीक है क्यों हो रहा है बिकॉज 100 नो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इवन दे हैव बीन ट्रेडेड ऑन सम अदर डे बिन्नी का कॉन्ट्रैक्ट इवन कहाँ पे हो रहा है सो बिन्नी दैट इज ये तो यस कॉन्ट्रैक्ट है एक सेकंड दिनेश वर्सेस बिन्नी वाले केस में हो रहा है दिस इज द पर्टिकुलर contract which the question is talking about. So Binny has purchased, sold, even sold ही होगा ना Binny sold 100 no contracts to Dinesh on day 7 और day 7 को purchase price क्या था that was ₹10 for Dinesh and for even प्राइस क्या है हमारा 60 + 5 है और अगर हमें चेंज चाहिए कितना चेंज चाहिए हमें 2500 का तो कितना चेंज आएगा क्योंकि 100 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो बाय 100 करोगे यानी कि +25 का चेंज चाहिए हमें और यहाँ पे किसका प्रॉफिट होगा बिन्नी का जो लॉस है वो डिक्रीज करना चाहिए तो 25 से कब डिक्रीज करेगा जबकि जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस हो वो इंक्रीज कर जाए 25 से सो ऑलरेडी इन दिस केस द प्राइस इज 10 रुपीज so that no price that is equal to 10 rupees this should be 35 rupees if this no price is 25 rupees more in that case बिन्नी का जो लॉस होगा that will be 25 rupees less for each share isn't it sir so 25 rupees कब इंक्रीज करेगा नो प्राइस 35 हो जाएगा यानी कि यस प्राइस हो जाएगा हमारा 100 minus 35 which is equal to 65 rupees yes price कब आएगा 65 60 is on day 1 65 will be on day 2 so this value will be on day 2 so d का value will be equal to 2 d should be equal to 2 as per the conditions of the question clear okay last question a new participant Farhan enters the simulation on day 4 and buys 10a yes contracts on e4 and 20b no contracts on e5 if he incurs no profit or no loss then find minimum possible value of a plus b if a and b are non-zero positive integers so day 4 पे Farhan also enters the simulation and there are two types of contracts that he has purchased yes contracts on e4 and no contracts on e5
and number of shares of E4, number of contracts of E4 that are 10A, and number of contracts of E5 no type that are 20B. Okay, and E4 का प्राइस क्या होगा डे 4 पे? डे 4 पे यस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या होगा? सो फॉर E4 डे 4 प्राइस that will be 35 plus 21 56 rupees. So price will be 56 rupees. And for a no contract of E5 on day 4, E5 day 4 yes contract आता 55 plus 964 rupees. Yes होता 64, but no will be 100 minus 64, that is 36 rupees. And actual scenario, actual outcome क्या है? For E4 and E5 both, the actual outcome is yes. So on E4, Farhan will be at profit because outcome is same as the type of contract, but in E5 he'll be at loss. E4 में profit कितना होगा? 56 rupees he has paid, but he'll be getting 100 rupees, so profit will be of 44 rupees. But on E5, there will be loss of 36 rupees. So total profit on all E4 contracts will be 44 into 10A. And total loss on all E5 contracts will be 36 into 20B. And the result is equal to 0. So 440A minus 720B, this is equal to 0. So basically 440A, this is equal to 720B. 0 and 0 get cancelled out. 4 से और काटा पीटा क्या? तो 11 18. So A by B comes out to be equal to 18 by 11. The ratio of A and B will be 18 and 11. Question पूछ रहा है कि A plus B का what will be minimum value? So smallest value of A will be 18, smallest value of B will be 11, or in general value of A will be 18k multiple of 18, or a value of B will be 11k a multiple of 11. So 29k will be sum of A and B. So smallest possible value will be equal 29 for this particular question. क्या appreciate कर पा रहे हो? So this was a beautiful set, but I believe कि तुमने सारे के सारे चीजें आप समझ में आ गई हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में. ठीक है, और थोड़ा सा कम्बसम था, टाइम टेकिंग था, एग्जाम कंडीशन डेफिनेटली ऐसे सेट में कॉशियस रहना है, और बट करना सीख जाओगे और थोड़ा सा इजी हैंडल करने वाला सेट आएगा तो डेफिनेटली कर सकते हो. ठीक है, कमेंट में मेंशन करना तुम्हें सेशन कैसा लगा और कितने क्वेश्चन तुम अपने एंड पे इजीली हैंडल कर पाए, और क्या तुमने इस क्वेश्चन सेट को टाइम दिया अपने एंड पे और फिर एंड में सॉल्व हुआ तुमसे. भले ही स्टार्ट में लग रहा हो कि ये बड़ा कम्बसम सेट है, बट बाद में सॉल्व हो गया था कि नहीं हुआ था. ठीक है, कमेंट में मेंशन करना सेशन कैसा लगा, और साथ में सेशन को अगर अब तक लाइक नहीं किया जरूर से लाइक कर देना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.